Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In our today's lecture we are going to talk about how to attempt a question on John Austin. Now in terms of jurisprudence exam, which is a level 6 subject in University of London course, one of the most repeated questions that you will find in the part B of the exam is on John Austin. Now, you know that John Austin was a legal positivist and he developed his command theory, which was published by his wife Sarah in what we call as the province of jurisprudence determined. I have created a separate lecture explaining the work of Austin. So if you haven't watched that video, make sure to do that first, then come on to the topical past papers questions. And then in this very lecture, I will also be teaching you how to actually write a full-fledged essay. सो कुछ पहली बातें बेसिक बातें कर लेते हैं। पहली बात ये है कि पार्ट बी के अंदर ऑस्टिन का क्वेश्चन तकरीबन 90% टाइम्स आपको रिपीट होते दिखाई देगा। आपको ये जहन में रखना है कि ओवरऑल क्वेश्चंस आपके पास 12 होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के एग्ज़ाम में, जिसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके पास पार्ट ए कहलाता है। उस पार्ट ए में से आपने कोई एक चॉइस पे क्वेश्चन जो आप चूज़ करते हो एरिया को, जो कि आपको प्री डिफाइंड होता है, यानी आपको पहले पता होता है कि उस किस एरिया पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने उसको चूज़ करके उसके ऊपर अपना आंसर उस सेट केस से रिलेटेड लिखना होता है। पार्ट बी में यू विल हैव अराउंड 9 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोज 9 आप किसी भी क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हो। ये एक बड़ी कॉमन सी मिसकंसेप्शन है कि एक पॉपुलर क्वेश्चन जो होगा वो शायद लेस स्कोरिंग होगा या मोर स्कोरिंग होगा। ऐसी कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने इटसेल्फ कोई एक्सप्लेन नहीं की हुई। तो हम इन चीज़ों से बेहतर है कि हम अपने आप को अवॉइड करें। कोई भी एरिया जिसके ऊपर आपके पास अच्छी कमांड है, जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उसके ऊपर ऐसे करोगे, आपको स्कोर मिलेगा। इसके अलावा एक और बात मैं ये कर दूं कि बहुत से लोग जो हैं वो पॉजिटिविज्म की तरफ जा नहीं रहे होते, वो नेचुरल लॉ थीरीज़ की तरफ जाते हैं, बेशक वो क्लासिकल नेचुरल लॉ थीरी हो या आपके पास मॉडर्न नेचुरल लॉ थीरी के अंदर फुलर और फिनिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी इन पार्ट बी टू चूज़ फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में नज़र आएंगे। सो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं बेसिकली जॉन ऑस्टिन का, क्योंकि मैंने लेक्चर भी क्रिएट किया हुआ है और मैं इसी से रिलेटेड आज ये बेसिकली एक पास पेपर की क्लास कंडक्ट करना चाह रहा था ना। सबसे पहले तो हम सारे पास पेपर्स देखते हैं, उससे हमें एक क्लैरिटी नज़र आएगी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग अप एवरी ईयर, जो कि पेपर में आ रहा है, ताकि हम एक थीम को आइडेंटिफाई कर सकें। ये बात समझना ज़रा ज़रूरी है। देखिए, आप लोग लेवल 6 में पहुंच गए हैं, आपको हर इस बात का अंदाज़ा होगा कि हर एरिया के ऊपर एग्जामिनर ने सर्टन थीम्स को टारगेट करना होता है, यानी किसी एक एरिया पे वो ज़्यादा फोकस करता है इन सिंपल वर्ड्स। तो और वो एरिया नॉर्मली वो होता है जिसके अंदर कंटेंशन ज़्यादा होती है। तो हमें ये फिगर आउट करना होता है कि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन देने का पैटर्न है वो किस एरिया के ऊपर ज़्यादा है। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर क्वेश्चंस बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने टॉपिकल फॉर्म के अंदर अभी ओपन हुए हुए हैं, इसी तरह का आपको क्वेश्चन सेम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, आपको सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, सेम थीम के ऊपर आ सकता है, और वो भी एक बात अगेन ये भी जहन में रखने वाली है कि थीम्स भी आपकी मल्टीपल होती हैं, एक थीम नहीं होती। एक टॉपिक के ऊपर 2 से 3 थीम्स हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एरिया कि उसमें कितनी ज़्यादा कंटेंशंस हैं। तो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर। सबसे पहले हम टॉपिकल पास पेपर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक सॉर्ट ऑफ रोड मैप बनाएंगे, एक स्केलेटन आंसर बनाएंगे कि हमें हर पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी आपके सामने कोई ऐसे या प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो आप उसका हमेशा एक स्केलेटन ज़रूर बनाया करें, यानी आप अपना एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया करें कि भाई मैंने इस आंसर में ये चीज़ इंक्लूड करनी है। उससे आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके शुरू में ही आपको पता लग जाता है कि आप अपने आंसर में क्या क्या इनकॉर्पोरेट करोगे एट द वेरी बर्ड्स आई व्यू। आप ऊपर से देख सकते हो कि यार अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं है। जब आप लिखना शुरू कर देते हो तब आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर जाती हैं आपके माइंड से, तो आप चीज़ें भूल जाते हो। नंबर 2, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट के दौरान कोई पॉइंट मिस कर जाते हो, सो यू कैन ऑलवेज रिफर बैक टू योर स्ट्रक्चर एंड सी कि आपने वो पैराग्राफ इंक्लूड किया है या वो आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड किए हैं या नहीं किए। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अ लॉट ऑफ पीपल दे डेवलप अ स्केलेटन एंड अल्टीमेटली वो थोड़ा सा उससे डिविएट भी होते हैं। कोई मसला नहीं है, व्हेन यू आर थिंकिंग एंड यू आर राइटिंग एट द सेम टाइम, तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस उसके साथ साथ ही चलता है। सो हैविंग सेड दैट, ज़रा सबसे पहले हम 2015 से लेके फ्रॉम 2015 टिल 2022
मैंने इसमें पेपर्स डाले हैं, आप 23 के भी देख लीजिएगा, वो भी आपको मोर और लेस सेम ही मिलेंगे. So the first question, Austin's biggest mistake was that he failed to consider that there must be something other than the threat of sanctions that explain why people are under an obligation to follow the law. Now, there are a couple of words that we need to highlight within this statement. And I think that's the first thing that every student must do. Once they read the question, the first thing they should do is to segregate the different themes or certain keywords that the examiner tends us to focus on. So the first keyword I would like to highlight here is a threat of sanction, because that is a word commonly used by Austin. And the second most important word is obligation to follow the law. Now, this is because those of you who have read Hart, you would know that the Austin's biggest criticism was that he always focused on law being obliged to people. So there's no choice. Whereas Hart explained that the law has an obligation, which means that people have an internal aspect to follow the law. And as Hart himself in chapter number 2 explained, that command is primarily an appeal not to fear but to respect authority. I think that whole idea of acknowledging the law by yourself and following it was the main theme of Hart. So the examiner wants us not to limit our discussion to Austin only. And if you look at the key words, that the starting word, Austin's biggest mistake, was it really a mistake that he placed sanctions at the center of his theory? The fact that the law or command can only become command if it is backed with sanction. Is that his biggest mistake? I don't think so, and that's the very debate about it. So this is a classical question on Austin that focuses on Austin's theory, the four elements in his theory: the command, sanction, sovereign, and habitual obedience of that very sovereign. And some people would add illimitability of the sovereign as well. Along with that, there is another discussion, there's another side of the question, and that is the criticisms that Hart has placed on Austin's theory. Were those criticisms justified, or was Austin really right what he was saying? So this question, is like a table tennis match. It's back and forth between Austin and Hart. So it's a mixed question, which is primarily based on Austin's theory, but with the criticisms of Hart. And I think I want to emphasize this point at this point कि जब भी आपको ऑस्टिन का क्वेश्चन आएगा, आप ये जहन में रख लो कि उसके साथ ओवरलैप में हार्ट आएगा. ऑस्टिन कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आप हार्ट को नहीं पढ़ लेते. अब अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, मैं फिर अल्टीमेटली इसके ऊपर बात करूंगा. अब आपने पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है कि इट फोकसेस ऑन ऑस्टिन एंड ऑस्टिन्स न्यूक्लियस बीइंग सैंक्शंस विद हार्ट्स आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशंस. The next one is from 2016. More often than not, law is indeed like a gunman situation writ large. Legal theory ought to take more seriously the idea that persons are mostly subjected to laws they do not know, understand, or discuss. Now, again, this is a very argumentative statement. So this statement is basically favoring Austin's theory, and it's saying that ultimately the purpose of the law is basically to coerce people to follow it. And the fact that Hart, the example that Hart gave, is and the problem he identified with that example is in itself flawed. This is what the statement is talking about कि जी वो जो गनमैन की सिचुएशन पूरी बना के उसने एक्सप्लेन किया था कि इवन क्रिमिनल लॉ की भी जो डेफिनेशन है उसको भी ऑस्टिन की थ्योरी फुलफिल नहीं करती, क्योंकि उसमें जर्नैलिटी नहीं है, उसमें परसिस्टेंस नहीं है, उसमें हैबिट ऑफ ओबीडियंस के प्रॉब्लम्स हैं. और उसने वो जो पूरा एक हाइपोथेटिकल खींचा था चैप्टर 2 के अंदर, उसको बेसिकली ये यहाँ पर एक अंडर डिस्कशन रखा जा रहा है. ये भी जहन में रखिएगा, दिस क्वेश्चन ऑल्सो फोकसेस on the positivity or the positivism of Austin's theory without any internal aspect of following the law. And it's purely based on coercion and sanction. So the underlying theme, and I think if I have to highlight certain words, the word that I would highlight is the gunman situation, because that's the word telling me that he wants us to talk about Hart
and Hart's criticism. Um, so and one of the most interesting and powerful quote used by Austin, that the merits and demerits of law is one thing, its abrogation and disabrogation is another. What exists as a matter of law is law. That very statement, where he depicts his thought and his idea as purely positivist, the fact that people don't like law, the fact that people don't follow it, or whatever the merits or demerits of it is completely a different inquiry. What, according to Austin, is a command backed by sanction, it is what the law is, whether you like it or not. And so that very idea is being called in question. So if I have to say, I would say both the 2 years questions that I just put in front of you, both of these two questions, they resonate with one another. They are very alike. They focus on sanction, they focus on command, they focus on the criticisms that Hart has placed. So it's a very common theme that we are so far looking. If we look at the question from 2017, that's the third question. Austin's theory has often been misunderstood. It is certainly not as crude as Hart makes it out. I think this is a very simplistic way, a very simple statement where the most criticism by Hart that are placed on Austin's theory are called in question. So this does not only limit ourselves with sanctions, but if you follow up the next statement, it says, indeed, it is the best account we have of the relationship between law and power. So being obliged versus being under an obligation. That's the theme that is being targeted. So a mixed, infused question on Austin primarily, and then linked it up with Hart. Bentham and Austin theory were exactly right where Hart thought it failed, namely in search for coercive dimension accompanying law. So again, focus is on sanctions. Whenever there is a focus on sanctions, of course, we're going to talk about Hart's power conferring rules, the problems with power conferring rules. So we are going to build an argument, a counter argument, and further a counter narrative to that very argument. If you look at question from 2020, the simplicity of Austin theory is its greatest virtue. Nothing is more simple, if not also more obvious, than the idea that law is a command of the sovereign. Hart's critique only complicates the matter. Discuss. Now, again, simplicity of Austin's theory. So I think the four elements that we've been talking about that are being called in question. The fact that it has a command, sanction, and there's no complication, there's no reason that has to be given why Austinian people have to follow the law, unlike Hart, who developed his idea from critical reflective attitude and the fact that internal aspect of rule following was later developed on. As far as Austin is concerned, his theory it's very simple, it's very raw, and in this simplicity, one can truly say that Austin's theory then depicts a positivist philosophy, a positivist normative role of following the law. Austin was right. Law is best defined as command of the sovereign. Now, this question uh, focuses on not just the command in itself, but sovereign. So we have one theme that deviated from the last five questions, and that is question number 7, because this is a question that does not per se focus on uh, sanctions or the idea of coercion or the idea of compulsion, power, being obliged. So it's this question number 7, is much wider than the previous questions because it focuses on command, which of course to command ancillary is the sanction, because command for Austin would not become command if there's no sanction. But also the examiner wants us to talk about the problems of sovereign, and there are a lot. So in this particular question, we'll also focus on Hart's chapter 4, where he talks about sovereign and the subject. So the whole persistence of law, the continuity of law will be under discussion in this chapter. The illimitability of the sovereign itself is a serious problem that Austin's theory faced from a lot of critiques. Um, so if I move on to the next two questions, particularly here we have from 2021 and then 2022. So three questions we have. Critically evaluate whether Austin's theory only works for one kind of rule, the rule of criminal law. If so, does this matter? So again, one of the biggest criticisms that Hart has placed in chapter 2 is for Austin that your theory is very limited to criminal law. I personally don't think so.
A lot of people don't think so. So again, it's a very argumentative essay. It talks about sanction. But here's the thing: Austin never talked about rule. He's talked about commands. So with that, when we know what this question is asking us about, any student who just merely write the answer from Austin's perspective would be wrong, because the statement in itself is demanding, because Hart was the one who blamed that, Austin, your theory closely resembles to criminal law, and your definition of command does not even fulfill that area of law as well. So this question is wider than Austin only. A lot of people would misconceive this if they haven't read HLA Hart's work. And this is why it's important that if you're doing a positivism question, any positivism question, which includes Kelsen, Austin, and Hart, make sure to read all three across board, and then you will be able to. Of course, it's step one is to read Austin, step two is to read Hart. So you have to follow the chronology. You can't read Kelsen and then go back to Austin, because well actually I feel that कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वो कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिविस्ट आइडियाज़ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ऑस्टिन की थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, और उसके बाद जब आप हार्ट पे आते हो और हार्ट के बाद कैल्सन पे जाते हो, तो फिर आपको एक पूरा सीक्वेंस समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ डेवलप की और सारा कुछ. सो इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन देखें जो कि 2022 जोन बी जून का है, दैट इज क्रिटिकली evaluate the usefulness of Austin's theory of law in the 21st century. Now this is a very different question. So it's not a classical question that focuses on Austin and the Hart's criticisms, which we have seen that most of the questions, so if there are like literally 10 questions, I would say 7 or 8 of those questions focused on Austin Hart debate, and that too focused on sanctions. But as far as question number 9 is concerned, or basically a question from 2022 June Zone B, this question is more on the practical side rather than the theoretical side. And so the examiner wants us to not just engage with the theory and provide critiques of it, he wants us to fit the theory into practical examples by giving some manifestations where command theory will actually work, or under which jurisdiction such theory would actually work. If we look at 2022 Zone A June, this one from the same paper, the command theory of law is best shown through the analysis of Hobbes rather than the theories of Bentham and Austin. Again, very critical. So now this is again a very tricky question because it focuses on other jurists as well, Jeremy Bentham and Hobbes. Both of these authors I have discussed in detail. So if you haven't watched those videos, I'll also place the link of those videos in the description below, along with the Austin's work. So make sure to check that out as well if you're preparing for the exam. So these were some of the topical past papers, and if you've seen that there's a very common theme that is being followed multiple times. The question focused on Austin Hart debate, and it primarily talked about sanctions. So we are going to now break down a question that how generally speaking, how the question should be, and then we'll review the answer. Now, remember, you have to follow IRAC method. Some students do follow CREAC method as well. The introduction, rules, analysis, conclusion model. It's a very common model. It's the most tested, safest model we can talk about when it comes to legal writing. And for any good essay would follow this model. Now, the first thing, introduction. Always have a powerful introduction. You can explain the statement, you can agree or disagree with the statement if it's very challenging. Some students, they like to come on a conclusion at that very start. You might be shocked with that one because you might have not heard about this writing style, but it is there. That is called CREAC method. So you first give a conclusion, you then explain the ideas, and then you start with the rules and then analysis and then finally conclusion again. So that model is also acceptable and it's very much liked, especially when you have very strong arguments about a particular point. So if the statement at hand is demanding you to be very critical, you can take the side or a stance from the very outset.
So explain the statement. Explain that Austin was a positivist, command, sanction, determinate source, sovereign. How Hart has criticized the theory of Austin in chapter 2 by redefining the notion of command through the respect of authority, and how there's a bifurcation between power conferring rules versus duty imposing rules. So that whole a difference you can talk about briefly in your introduction. You can further go on and provide a roadmap. Now, what is a roadmap? Roadmap is basically the sequence in which you will answer this particular essay. This is very important. A lot of people miss the roadmap. Now, roadmap आपको बेसिकली 2 लाइनों के अंदर ये बताना है कि आपका आर्ग्यूमेंट किस तरह से चलेगा, किस सीक्वेंस में फ्लो करेगा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, किन किन ऑथर्स को आप डिस्कस करोगे, हार्ट के क्रिटिसिज्म्स क्या क्या आप लाओगे, ये चीज़ रोड मैप है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, आप एक स्पेस दीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाइए, और वो है आपका थ्योरी का पार्ट. यहाँ पर हाउ ऑस्टिन डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव मोरालिटी, पॉजिटिव लॉ वर्सेस नेचुरल लॉ, जो एक पूरी डिस्टिंक्शन है पॉजिटिव मॉरल रूल्स के अंदर वर्सेस पॉजिटिव लॉ के अंदर और नेचुरल लॉ के अंदर, जिसको ऑस्टिन लॉ ऑफ गॉड कहता है, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. ये जो शुरू में उसने बाइफिकेशन की थी उसको आपने एक्सप्लेन करना है. डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ कमांड, डिफाइन सैंक्शन, define a determinate source, that every command flows from a determinate source. Some people would also explain the notion of superiority here. Now, superiority kya hai? For Austin, superiority signifies might, the power to inflict harm to others, and through that to fashion their conducts towards one's wishes. That's how he defines the idea of superiority. And then you can further go on and talk about that how Austin conceived that superiority is reciprocal. If you are, every human's superiority is not, no human superiority in fact is absolute in his opinion, but that is with regards to superiority. That's not with regards to sovereignty, because these are two distinct topics. In terms of the next paragraph, once you've explained these points, you have explained the command, sanction, determinate source, then go on to explain the sovereign and habitual obedience, the illimitability, the two characteristics of the sovereign, and independent political society. So that would come in like para 5 or para 6. It depends on you. Sorry, not para 5. It's part of lecture 6 of Austin, but as far as this might be para 3 or 4. So if this is para 2 for you, if it's still continuing, then para 3 can be hard criticism in 250 words. Para 4 would be Roger Cottrell and extract from Penner, जिसके अंदर आप डॉक्टर पेली वगैरह की बात कर सकते हो, और उसके बाद ultimately you can give conclusion. So there's argument, there's criticism, and then there's counter argument. तो आपका सारा चीज़ जो है वो पूरी हो रही है. Some students give practical examples in light of the question. खासतौर पे जिस तरह आपने 2022 का क्वेश्चन देखा था, which talked about the practicalness of the Austin's work in today's time, वो जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आज की टाइम के मुताबिक दोगे. नाउ अब आपके सामने एक एसे मैं रिव्यू करूँगा, एंड आई वुड गिव माई रेटिंग एट द एंड एज वेल, कि मैं उस एसे को किस तरह से रेट करूँगा, हाउ मच मार्क्स वुड आई गिव दैट वेरी एसे, जो कि ऑस्टिन के ऊपर सैंक्शन और सॉवरन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हार्ट के क्रिटिसिज्म्स भी हैं, और आपको मोर और लेस ये सारी चीज़ें उसके अंदर नज़र आएंगी. अच्छा जी, the question is, Austin theory has often been misunderstood. It is certainly not as crude as Hart makes it out to be. Indeed, it is the best account we have in relationship between law and power. So there's a past paper question जिसके ऊपर ये आंसर लिखा गया है. So it's slightly detailed. Some students don't like to go into that much detail. मैं आपको एक जनरल बात बता दूं, ये बड़ा एक मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि what should be the appropriate length of the answer. UOL has not fixed any length. In fact, during the COVID times उन्होंने आपको किया था कि जी आपने 4500 वर्ड्स टोटल करने हैं. अब वो चीज़ भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है अब तो, जब से वो आपको हॉल में लेके मॉनिटर्ड एग्ज़ाम कर रहे हैं. अब मामला ऐसे है कि आपके पास 4 आवर 15 मिनट्स हैं. सो आपने अपनी एक एवरेज निकालनी है. अगर आप 1 घंटे में देख के या बगैर देखे अगर टाइप कर सकते हो अराउंड 1200-1300 वर्ड्स, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर. लेकिन मार किस चीज़ पे खाते हैं लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं, लोग डिफाइन कर रहे होते हैं चीज़ें, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई
एकेडमिक डिस्कशन नहीं होती। और फिर वो कहते हैं यार हमने थ्योरी तो पूरी लिखी है, हमने आंसर में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट तो की हैं, हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले? बिकॉज ही डज़ नॉट वांट यू टू रीफ्रेम द गाइड, ही डज़ नॉट वांट यू टू लाइक गिव लाइक अ चैट जीपीटी सॉर्ट ऑफ एन आंसर। सो आपका एआई टाइप अगर आंसर होगा और उसके अंदर कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, कोई रिलायंस नहीं है एकेडमिक बुक्स की, तो देन उस पे आपको वो मार्क्स किस चीज़ के ऊपर देगा? वो तो ये जानना चाह रहा है कि आप कितने अच्छे तरीके से इस एरिया को समझे हो और आप इसको कितना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर पाते हो अपने वर्ड्स में, अपनी सोच के साथ। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ऑस्टिन थ्योरी वॉज ऑफन मिसअंडरस्टूड। पहली बात ये कहा जा रही है कि यार ऑस्टिन की थ्योरी वाकई बड़ी गलत फहमियों का शिकार रही है, मतलब वो इतनी गलत नहीं है जितनी हार्ट ने उसको बना दी है, बल्कि ये तो कानून का सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन है कानून की और ताकत की। अब आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज द ओपनिंग लाइन इज इट इज़ ट्रू। अब मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि इजीली आइडेंटिफाई, नहीं ये तो इससे तो पता है, ओके ग्रीन कर देते हैं। इट इज़ ट्रू दैट ऑस्टिन थ्योरी इज़ नॉट एज क्रूड एज हार्ट प्रेजेंटेड। सो आपने ओपनिंग लाइन में उस बात से अग्री कर दिया कि ये बात गलत है या ये बात दुरुस्त है कि ऑस्टिन की थ्योरी इतनी क्रूड नहीं है जितनी हाथ ने प्रेजेंट की है। इट इज़ टू reduce it to mere orders backed by threat is to obscure certain important features of the theory। कह रहा है कि जिस तरह से हार्ट ने उसकी थ्योरी को एक मतलब आपने उसको सिर्फ लिमिट कर दिया कि वो एक ओबीटी थ्योरी है, ये उस थ्योरी के साथ नाइंसाफ़ी थी। The answer would begin by elaborating Austin's theory. It would explore the criticism regarding it and see whether Austin's account of what law is can be can it be rescued. To begin, Austin simply states that the matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so called. That's a quotation that the child has used from the very work of Austin. अब एक बात का यहाँ पर जहन में रखें, ऑल्दो कि ये एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर ये पहली सिर्फ 3 लाइनों के अंदर उसने इंट्रोडक्शन दे के भी एक बिल्कुल 1 लाइनर के अंदर उसने रोड मैप प्रोवाइड किया है। अप्रोच ठीक है, डिफरेंट है, यूनिक है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं अगर लिखूँगा थोड़ा सा डिफरेंट लिखूँगा, मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन में करूँगा उसमें। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो थ्योरी की तरफ जा रहा है। इफ़ आई वुड बी एट his or her place, I would then, rather than going towards the theory, I would explain more about the idea of command, the idea of power, the idea of relationship between law and power, idea of obliged versus an obligation। थोड़ा सा मैं उसकी डिटेल्स में जाता, बट रियली लाइक दिस वे, डायरेक्ट है, कोई लंबी बातें नहीं है, टू द पॉइंट है। सो इट्स एक्सीलेंट स्टार्ट जो अभी हमें यहाँ तक नज़र आया है। सो उसके बाद थ्योरी का उसने स्टार्ट किया, what it includes is law set by political superiors to political inferiors. For Austin, then, law strictly so called law set by men to men. He characterized law set by God to his human creatures as natural law, which may become laws properly so called if they are commands of the sovereign. Austin then moves on defining law. He states that laws and rules or commands, rather they are species of commands. Thus, if we express or intimate a wish that I shall do or forbear for some act, and I will visit you with an evil in case I comply not with your wish, the expression or intimation of your wish is a command. Austin states that where there is a command, there is a duty. So I'm bound or obliged to your command, or I lie under a duty to obey it. Austin differentiates this definition of command from other signification of desire by emphasizing the fact that the part commanding the power or and purpose. He also explains that the evil is enforcement of obedience. It may be styled as a sanction and sometimes as a punishment, but punishment is too narrow, hence it only a class of sanction. So punishment की यहाँ पे बात कर रहा है, sanction के साथ उसको कह रहा है कि वो बहुत ही narrow definition है. So far, how are we going? We are going good, but थोड़ा सा इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि there's a lot of quotations. There's just too much extracted from the theory, which is good. I mean, back in time, this was excellent because that was something that we ought to learn. But now, when in open book exam, using too much quotations will increase your similarity index. Of course, it won't be plagiarism because if you properly cite that work, आप उसको quotation marks के अंदर properly लिखते हो,
वो प्लेजरिज्म में तो नहीं आएगा, लेकिन आपकी सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कि एग्जामिनर कहेगा यार ये आपने खुद क्या लिखा है इसमें से. सो आई वुड रादर यूज़ कोटेशंस. आई वुड रादर एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. जो पॉइंट्स बड़े रेलिवेंट हैं वो बाइफिकेशन की बात कर रहा है कि किस तरह नेचुरल लॉ वर्सेस लॉ मेड बाय मेन फॉर मेन में क्या डिफरेंस है. फिर वो पॉजिटिव लॉ के बारे में बात कर रहा है. फिर वो पॉजिटिव लॉ की डेफिनेशन दे रहा है, कमांड की डेफिनेशन दे रहा है, कमांड के बाद सैंक्शन की बात कर रहा है, सैंक्शन की डेफिनेशन दे रहा है. उसके बाद from explaining the above in his lecture, Austin moves on to the source of command in lecture 5. Here he states that law rules are direct or circuitous command of the monarch or a sovereign in number of character of a political superior, a person or persons in the state of subjection to its author. Austin sets out three authors of the command. Firstly, the monarch or the supreme political superior. Secondly, the subordinate political superior. And thirdly, the private person in pursuance of their legal rights. He then identifies positive moral rules, which are laws improperly so called because these are laws set by general opinion. He states that the main difference between positive law and positive moral rules is that the former emanates from determinate source, whereas the latter flows from the indeterminate source. So basically, ये बात कर रहा है कि every positive law has a determinate source, whereas positive morality does not really have a determinate source. मैं यहाँ तक भी बता सकता हूँ कि ऑस्टिन ने further जाके explain किया था कि there are two types of positive morality. One has a source, the other one does not have a source. तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी जा रही है. ये अभी तक सारी थ्योरी चल रही है. थ्योरी बिल्कुल ठीक जा रही है, एक ख़ास पैटर्न में जा रही है जिस तरह ऑस्टिन ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था. Now, this determinate source may take two forms. One is where a person or the body are determined specifically, individually or certain by characteristics. अब यहाँ पर ये वो पॉइंट है जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो. This was not per se relevant because well the question was very straightforward. तो अब यहाँ पर ये बताना कि जी डिटर्मिनेट सोर्स क्या चीज़ होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि लेक्चर 5 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑस्टिन ने एक्सप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. ये कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं थी. द अदर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन who answer to a generic description. Then in lecture 6, Austin sets out to another important element in his theory, that is the existence of sovereign in an independent political society. For Austin, where the determinate body is habitually obeyed by a population at large, and that determinate body is not habitually obeyed in obedience to any other determinate human source, then that determinate body is a sovereign, and the society is styled as politically independent. Not this is independent. Okay, here Austin characterizes constitutional law as positive morality rather than positive law. Very important point, because a supreme power limited by positive is law. Positive is law is a flat contradiction in terms. तो यहाँ पर वो quotation को use कर रहा है. Thus, for Austin, the sovereign is legally limitable. Though the sovereign points out, Austin wanted to differentiate law from other perspective enterprise. Hart also now इमीडिएटली यहाँ पर ऑस्टिन की थ्योरी ख़त्म हो रही है और हार्ट की थ्योरी स्टार्ट हो रही है. और हार्ट की थ्योरी एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो रही. हार्ट के जो क्रिटिक्स हैं जो कि उसने चैप्टर 2, 3, 4 में बिल्ड किए हुए हैं अगेंस्ट ऑस्टिन, उसका जिक्र यहाँ पर होना स्टार्ट हो रहा है. सो हार्ट also criticizes Austin's habitual obedience because the habits are not normative. They cannot confer rights, authorities to anyone. Thus, they cannot provide for the continuation and persistence of laws, which are the two salient features of law, according to Hart. However, for Austin to talk about the right to succession or rules to senseless, because for him sovereignty was a political fact which was seen in habitual obedience of the general population towards a determinate sovereign. Now, why I have changed the color from here, because one, firstly, he's moving from Austin to Hart, but the good thing is that it's a very strong criticism and then a counter criticism too, because the statement that was given in the question is being agreed with. तो वो जो क्वेश्चन था उससे वो बात हो रही है कि सॉवरन को जो पावर आ रही है वो कहाँ से आ रही है. वो कह रहा है कि यार ये जो हार्ट ने रूल्स की बात की थी कि रूल्स और यहाँ राइट ऑफ सक्सेशन होता है, वो कह रहे हैं ऑस्टिन के लिए तो ये मसला था ही नहीं, बिकॉज सॉवरनिटी फॉर ऑस्टिन वाज अ पॉलिटिकल फैक्ट जो कि
दिखाई जा सकती है empirically by showing habitual obedience of the populace, यानी लोगों की habitual obedience की बुनियाद पर. Bentham concurred further from the persistence of laws was resolved. Austin in relying on Hobbes' quotation, ये Hobbes के spelling यहाँ पे गलत है. Hobbes' quotation that legislator is he not by whose authority the law was first made, but whose authority they continue to be the law. This is a very important quotation and very powerful one. बहुत अच्छी जगह पे यूज़ हुई है ये quotation और इसका बहुत अच्छा impact जाएगा. Thus, Austin introduced the tacit command of the sovereign, whereas for continuation, one may argue that Austin identified a sovereign in UK, the House of Lords, monarch, and the electorate of the Commons. So the fact, so practical side को भी touch किया है foreign से. So the fact that electorate is included their new sovereign as such. However, this is criticized by Hart, who argued that how can electorate be in a habit of obedience to itself? Also, critics have stated that this finding of sovereignty is problematic because it confuses legal with political sovereignty, but it may be possible to rescue Austin from this as well. A.V. Manley. Now, I've been talking about the academic inclusion of the writers. Now you can clearly see कि उसने सिर्फ ऑस्टिन या हार्ट की बात नहीं की, उसने बाकी एकेडमिक्स को भी इंक्लूड कर लिया. A.W. Manley states that Austin's sovereign is a pre-legal concept. So Austin is not defining legal sovereign, and that there is nothing incoherent in claiming that the individual is subject to the authority of collectively as an institution, because as stated previously, Austin's sovereign is an abstraction. Final point that may be criticized in Austin's theory is that the sovereign is legally illimitable. One should bear in mind that the sovereign is only free from legal limitations and may very well be subject to general opinion. So, counter criticism. The reason for this is that the positive law can be changed by the sovereign, thus are unable to bind. However, critics argue that constitutional law exists and it is wrong to characterize it as not law. In case of UK, Austin's contention may prove right as Parliament cannot bind itself or its successor. Further, Dicey also states that breaking of constitutional connections do not itself result into legal consequence, but it may lead to legal problems. Austin holds that the constitutional law may only be regarded as general maxims or principles that the sovereign may use to guide, which are to be regarded as deserving abrogation by the general population. Though Austin does not provide that positive law may bind a part of the sovereign because sovereign as a whole is illimitable, but stands against the recognizing constitutional law as law. In case of US, this may prove problematic because one can see that certain provisions of the constitutional law relied on by the courts to declare the acts invalid. Here, Austin argues that the body who can change the constitution is the sovereign, but then, according to the critiques, Austin's sovereign is who slumbers and sleeps, but it should be kept in mind that Austin was not defining legal sovereign. Furthermore, one can appreciate the relationship between power and law here. Now, see, the best part so far that is going into the question is the fact that how the student is linking the theory with practical aspects of the world, or in our today's modern times, talking about the US codified constitution and the UK uncodified constitution and unwritten constitution. That shows that how deeply the student has understood the area. Furthermore, इसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि किस तरह से आंसर डिस्क्रिप्टिव नहीं है और बार बार जो सवाल था कि क्या रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड पावर क्या है, उसके ऊपर वापस जाया जा रहा है. Austin describes law as emanating from powerful source. The source is power only because it can affect others with evil. Thus, monarch is the superior of the governed. However, Austin recognized that fact
that governed collectively may be superior to monarch. He defines reciprocal relationship. So मैंने आपको जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि लेक्चर 1 के अंदर सुपरॉरिटी को वो रेसिप्रोसिटी से लिंक करता है कि सुपरॉरिटी जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पे ऊपर होता है. One can see the utilitarian approach being simplistic and realistic. As Cottrell states that Austin critiques desires to see a legal system being governed by rates even in the highest reigns, but Austin Austin's theory is about the rule of men. Though one may admit the lack of recognition of constitutional law, but it should be kept in mind that not all countries regard it as resulting in serious legal consequences. For example, in Switzerland, it is regarded as merely political or hortatory, as Austin relied may yield occasional obedience to general opinion. Now that an overview of Austin theory is given, we would look at various criticisms, most notably by Hart. Hart states that the expression of wish requires an imperative mood. For him, that is the gunman example, where the gunman coerces the clerk and orders him at gunpoint. Hart states that Austin's monarch in the position of gunman who only coerces people to follow his wishes. He explained that the reason for this comparison is that the law is neither face-to-face command nor a command nor is command appropriate. The former is based on Hart's explanation of generality required by law in terms of an act and people. The later is based on Hart's respect for the word command, which can be seen in the statement that command is primarily an appeal not to fear but to respect to authority. Hart disagreed with the element of fear that draws people to obedience because it presents a situation of being obliged. Hart relies on law imposing an obligation which requires a voluntary obedience towards law. These criticisms can be rebutted. Hart's account to face ordering and the lack of generality is misleading because Austin's differentiated between command, which are laws, rules, and occasional particular commands. The former obliges generally to the acts and forbearances of the class. The later obliges to a specific act or forbearances. Further, the difference between oblige and obligation may be superficial, as shown by Shore, who states that various U.S. courts' judgments show that the two to be used interchangeably. Also, the use of command by Austin may signify power relations and the authority presents in commanding party, which is missing in the gunman example. A point raised by Olive Corona that a command is not appropriate because it refers to a determinate person, whereas the law comes from an ever-changing multitudes which comprises the political machinery of the state. Here Roger Cottrell comes to the rescue. He states that Austin's sovereign is an institution, it is never an individual. Austin's sovereign is an abstraction. The premise of this finding is that Austin relies on a traditional political theory just as Hobbes, this is not Hobbes, did when he states that the sovereign is an artificial soul of an artificial man. Further, to reduce Austin's theory to OBT is wrong because habitual obedience is rooted in custom, prejudice, and reason to found in principles of utility, that is, a recognition of an expediency of the government. This statement presents that the general population did not just obey because of fear of evil. This can also be found in Austin's own analysis of Dr. Paley's reliance on the violence of motive to compliance. Austin stated that there could be two meanings of Dr. Paley's reliance and violence. Uh, First could be that Dr. Paley relies on it to ensure certainty, but Austin confirms it by stating that no amount of violence can be rendered can render obedience certain. Second meaning could be that what is not feared is not apprehended as evil. Again, Austin disagrees. He states that the magnitude of evil and the magnitude of chance of incurring it it is a foreign to a question at hand. To him, sanction, even if feeble and insufficient, is enough for duty to exist. One may draw the conclusion that the critiques are wrong, is assuming for Austin obedience is only due to fear. For him, clearly, fear is only a prerequisite of compliance. However, his primary reliance on sanction is because of Shores highlights it was to make the legal system realistic.
To conclude, it is wrong to say that Austin theory lacks depth and coherence, make it a relic of past times, as shown the crude nature attributed to it can be rebutted. Lastly, it does provide a good account of relationship between law and power. So there's a very interesting conclusion at the very end, short, precise. But let's talk about the analysis. I think excellent analysis. There are some mistakes, some spelling mistakes, typing errors, some grammatical errors. That's perfectly fine. We want to see that it's a human writing at the end of the day, and it's a human writing in an exam stressed environment. So we don't want a perfect, but if like there's just too much repetition of the mistakes, that could be problematic as well. A first class answer or a 2-1 level answer needs to show good level of English, good command of grammar and expression, the sentence structuring, the analysis, all needs to be top notch. As far as the analysis later on जो उसने हार्ट का किया, हार्ट के जो ओबीटी या गनमैन थ्योरी का रिलेशनशिप ऑफ पावर और ओबीडियंस को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से एक आर्गुमेंट बिल्ड किया, उसको फिर निगेट किया, और ये नहीं कि अपना ओपिनियन दे के निगेट किया. ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि हम अपना ओपिनियन दे दें तो हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपका ओपिनियन मैटर करता है, डेफिनेटली उसकी एक वैल्यू है, एक वर्थ है, लेकिन ओनली आफ्टर यू हैव इंक्लूडेड द ओपिनियन ऑफ एकेडमिक ऑथर्स जो आपके मुख्तलिफ हैं. जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट ने रॉजर कॉटरेल को डिस्कस किया, डॉक्टर पेली वाली एग्जांपल दी जो कि आपकी पेनर वाली किताब में दी गई है. उसके अलावा जो एक आर्टिकल है डेविड शेफ और आई थिंक रिचर्ड नोबल्स उस बंदे का नाम है, उस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये एग्जांपल दी गई है. उसके अलावा जो एक और पॉइंट ऑलिव कोरोना का जिक्र किया गया है, शोर का जिक्र किया गया है. सो देयर लॉट ऑफ ऑथर्स, ए डब्ल्यू मैनली का जिक्र हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑथर्स जिसको स्टूडेंट ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. सो इट्स अ वेरी, in my opinion, I would rate it a high 2-1 answer, if not a first class answer. If not first class, because I think first class answer में थोड़ा सा ना और precise होता argument. So maybe I would rate it 65 to 66%, maybe 67%. But डिस्टिंक्शन के लिए शायद कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव होती जा रही थी. अगर वो सिर्फ एनालिसिस होता, और ख़ास तौर पे जो पैरा नंबर 2 था जिसके अंदर थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था और वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड. सो ये आपके सामने आज मैंने एक पूरा आंसर इसी वजह से डिस्कस किया है, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, और एक सैंक्शन की और जो सॉवरन का जो ऑस्टिन की जो तो कॉमन थीम्स हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं हार्ट के साथ लिंक होके, उनको आपने किस तरह से एड्रेस करना है. याद रखिए, एग्जामिनर हेट स्टॉक आंसर्स. अगर आप पहले से आंसर बना के जा रहे हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट एट हैंड के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा और उसको बार बार इंगेज नहीं कर रहा जो स्टेटमेंट में पूछा गया है, उसने आपको बिल्कुल या तो फेल कर देना है या आपको उसने पासिंग मार्क्स देने हैं. बिकॉज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, अब तो फेल करना बनता है, बिकॉज टेक्निकली यू आर रीटाइपिंग समवन एल्स आंसर और मे बी पैराफ्रेज्ड इट और वट एवर, वी डोंट केयर. तो एक बात जहन में रखिएगा कि स्टॉक आंसर या आप बिल्कुल प्री प्रिपेयर्ड मटेरियल लेके जाएं, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है. आप अपना आंसर पहले से तैयार कर लें, 2-3 थीम्स के ऊपर तैयार कर लें, बट मेक श्योर कि आप वहाँ पर उसको ऑल्टर करें एज पर द सिचुएशन, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन. जो वो उसमें पूछा जा रहा है आप उसकी तरफ रहेंगे, ना कि उन चीज़ों की तरफ जो कि आपने जनरली पहले से लिखती हुई थी. सो आपके सामने मैंने सिर्फ ये एक आंसर रखा है. इस तरह के बहुत से आंसर्स लिखे जा सकते हैं, इससे बेहतर भी लिखे जा सकते हैं, बट इसको आपको पढ़ने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि आपने इस तरह से अपना आंसर डेवलप करना है. इफ़ यू आर स्टडिंग और आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह से इसको आपने अप्रोच करना है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वन. मैंने ऑलरेडी पार्ट ए का 2024 का जो पार्ट ए है उसका तो मैंने वीडियो बना दी हुई है. अगले सालों की ज़ाहिर है बाद में बनेंगी. इस साल तो 2024 की जो है वो अपलोडेड है. पास पेपर की जो मैंने प्रोजेक्शन दी हुई है कि दिस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वुड फाइंड इन पार्ट ए, और उसका आंसर आपने किस तरह डेवलप करना है, किस तरह लिखना है, लिबरलिज्म के परस्पेक्टिव से डाल दिया हुआ है. मैं फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म और हार्ट के ऊपर इसी तरह की कुछ और लेक्चर्स भी क्रिएट करूँगा जो कि
आपको क्वेश्चन करना और उसकी जो थीम्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज these questions and then the answer pattern that I've explained. If you have still any questions, comments, feedback, please leave a comment below in the comment section. And again, thank you very much for watching this. If you have not already subscribed to this channel, make sure you do so and share it with your friends so that other people can take advantage. Thank you very much.